सबको राम राम। कर सकते हो और हर रोज यहाँ पे 2 बजे क्वाला टॉक होती है और सबको राम राम। आज हम आपको लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया के खेत में और यहाँ पे सारे जानवर भी हैं, ट्रैक्टर भी है, ये ट्रैक्टर खड़ा है, इसमें राइड भी करेंगे और बच्चों के लिए सारे जानवर, ये रहा घोड़ा, ये सिडनी से सिर्फ parramatta से सिर्फ 20 मिनट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक छोटा सा एरिया बना रखा है जहाँ पे सारे जानवर हैं, खेत के सारे सामान हैं। आप दूध काटना देखोगे, गाय के दूध काटेंगे अभी देखना। ये यहाँ पे पीछे कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है किसी ने, तो यहाँ पे आप बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और पूरा फार्म नर्सरी है, देखो यहाँ पे। ये भाई साफ कर रहे हैं इसको, मिला रहे हैं एक तरह से। हर रोज यहाँ पे 2 बजे क्वाला टॉक होती है और 2:30 बजे काउ मिल्किंग, दोपहर सुबह 11:30 बजे भी मिल्किंग होती है और एक होती है 2:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं क्वाला टॉक देखने, उसके बाद फिर मिल्किंग। Now the word koala means no water or no drink in Aboriginal, and funnily enough, the Aboriginals knew it a lot sooner than we did by naming them koala, that these guys don't drink water like you or I do. Okay, we get water, we drink it out of the tap. No, the koalas do have a water bowl over the back there, but that is more there for you guys than it is for our koalas. Okay, there is no food for those animals, so they've got to get their moisture from somewhere. Now, in general, the koala will get all its water from our gum leaves. So 50% of that leaf is water. Okay, and that's where the boys are getting all their moisture from, is from their leaf. Okay, now if you take away half a leaf, what are we left with? Yes! Everyone's sitting there looking at me like, what? Okay, you guys definitely have school holiday mode, aren't you? Alright? If you take away half of something, you're left with the other half. Alright? Now, out of that half, we'll keep the good half, out of that half that is left, only about the top slither is where all the energy comes from. Okay, and what I mean by energy is when we eat our food, we get all energized. Okay, all our carbs, all our sugars go up in here with a bit of their proteins as well. Okay, so out of a leaf that size, only that much is energy. Now, of course, koalas are, well, down to my
खा लेंगे इतने हाथ से। हाथ से तो नहीं, ऐसे देते हाथ से मुंह में खाइए। तभी ऐसे फेंको, ऐसे क्यों फेंक रहे हो? नहीं कर दिया। मम्मी इधर देखो, डायमंड देखो। उधर बकरा खड़ा होगा, देखो वो पीछे। हम उसको खाना दे दो। गुड जॉब तन्वी। गोट आ गई उधर, उसको भी खाना है। एक इसको भी खींच लो भाई ना। कम कर विद योर्स टू फीड इट। तभी उसको पापा को फूड दो। हाथ में ले तो आगे दादा को खेल दे। लिपिका मत दे, में गिरा देंगे, तू आजा। You know what? You better if you want to go in there to not go in the food. I think that's what the rest is like. तो अब हम आ गए हैं काउ मिल्किंग पे। गाय खुजा रही है अपने आप को भाई, और अब यहाँ पे हो गया दूध चढ़ा था गाय का, दार वार दे दी जाएगी। So cute. तो पापा ये खुजा रही है, ये खुजा रही है, खुजा रही है अपने आप को। बुरस लग रही है, बरस लग रही है माथे पे खुजाने के लिए, ऊपर भी सारी बॉडी को। और वो स्प्रिंग लग रहा है ऊपर वो, ताकि वो ऊपर नीचे जैसे भी इसके हिसाब से हो, उसके लगे ना और ऊपर नीचे हो जाए। तो देख लो But she knows as soon as she comes in here, of milk a day. Okay? And our jerseys are producing 2.5 buckets, so 25 litres a day. Okay? Now, Jersey milk is very creamy. When you see the milk go into the bucket, you'll see it's a bit of a yellowy colour. And that's that high cream content in the milk. So Jerseys are known for that nice cream content, and they'll often produce a lot of those high-end creams and cheeses that most people will pay a fortune for, just because it's come from a specific cow. Our Friesians produce quantity over their quality. So their milk is a little bit fattier, okay, but if everyone here had a glass of milk a day, I'd be running out of cows if I used my Jerseys. So we use our Friesians for most of the drinking milk, and that's because they're producing a lot more. If you do think about it, one cow producing 25 litres, and I buy a quota from dairy farmers for 100 litres, I'm going to need 4 cows. But if I have a Friesian cow and they're producing 80 litres, I only need 2. So my cost of running my farm is a lot better. So, back in the day, we didn't have cows that produced those large quantities of milk. We just had a cow in the paddock. But what we noticed is one cow produced more milk than the other, so we bred from that cow, and then the next cow that produced more milk, we bred from that cow. Because the more milk we can produce from less. You know where's the best place to get milk out of the cow, kids? Under what? Under. On this side, the other side. The under one. No, the others. I'm also going to give her tea today. David, David, David. David, पैर देखो।
तो अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पे। Thank you. Thanks, guys. You guys are right. Thank you. गाय कैसे? कहाँ के नहीं इधर से, चलो इधर से कटो उठा लो। शाबाश। ये ट्रैक्टर है, अपोलो। ये था कैम्पसले हिल फार्म, काफ़ी अच्छी जगह है बच्चों के लिए छुट्टियों के लिए। कैसा लगा बताना प्लीज़, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते रहेंगे सिडनी की, ऑस्ट्रेलिया की हम। चलो भाई, तब तक के सबको राम राम, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।